Hello students, welcome back to my YouTube channel, and again I am here with my new topic square and square root, cube and cube root. Before discussing about the chapter, I would like to introduce the term square. So as I said square, तो आपके माइंड में क्या आया बच्चों? आपके माइंड में आई थिंक सो ये ज्योमेट्रिकल फिगर आई होगी जिसके बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ा है. This is a square in which all the sides are equal. But my dears, I am not going to talk about this square. I am going to talk about this square which is related to algebra. So what is square? If I write a number 2 and power raised to 2, then equals to, it will be how many times? 2 times. 2 multiply 2, it will be equals to 4. So square can be written as in the form of power of any natural number. It can be of any natural number, as I have written 6 square. What does mean this? 6 will be 2 times. 6 multiply 6 equals to 36. It's similar as we are just going to find out area of this square, then which formula we are using? Side multiply side. 2 times a side, same as the number. When we have to find out square of any number, then we have to go for multiply the same number 2 times. So as if I just go for 36 square, it will be 36 multiply 36. So exact definition of the square is when we multiply a number by itself, then the product is called square of that number. So as we'll discuss about the properties of square numbers. So first property, that is property of square. So as if I write the natural number starts from 1 square, 2 square, 3 square, then 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square. So what will be the answers of these? 1 square will be 1 multiply 1, it will be 1. 2 square will be 2 multiply 2, it will be 4. 3 square will be 3 multiply 3, it will be 9. 4 square will be 4 multiply 4, 16. Similarly, 5 square will be 25. 6 square will be 36. 7 square will be 49. 8 square will be 64. 9 square will be 81. And 10 square will be 100. And as if we have to find out the ones place of any digit, so how we can find out the square? If we just go for the square of that particular number, what will be the ones place digit? How we can recognize this? So as you know, 2 square will be 4, 3 square will be 9, and 4 square will be 16. And if we just go for square of 4, then last digit will be 6. So similarly, as we have to find out the square of 24. So 24, then just you have to see the ones place digit, or you can say unit place digit of that particular number. As here 24 square means I have seen here 4. So 4 is ones place. What will be the square of 4? It will be 16. 16, last digit of 16 is a 6. This means when I just go for squaring of 24, then what will be the ones place? Ones place will be 6. Unit place number क्या होगा इसका? 6 होगा. As we can check also by multiplying it, as I'll just go for multiplying 24 with 24. So 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8, plus 1 9, multiply 2 4s are 8, and 2 2s are 4. So answer which we will get, that will be 576. So students, 576, and we come to know about this digit. The ones place digit of this number will be 6. As we can find out the number as much bigger. For example, you are going to take 3-digit number, 4-digit number, and you have to find out for that what will be the ones place digit of square of this number. So this method will be followed. Just you have to square the last digit, and then you come to know, as here it was 4, then 4 square will be 16, and that ones place digit will be 6 of this number. As I'll just go for taking another example, 65 square. So 65 square, just go for squaring of this number. 5 square. 5 square will be
25. So ones place digit is a 5. So you can write down here the ones place digit will be 5 of this. And this is the method to find out ones place or unit place. So students, next property, that is perfect square. Perfect square, if I write 1 square equals to 1 already, which we have revised, 2 square 4, 3 square 9, up to 10 square, it will be 100. So what is perfect square? A number, natural number, which can be expressed as the product of pairs of same factors is known as perfect square. How it will be? For example, I have written here number 16. And 16 we know can be written as 4 multiply 4. Same factors equals to 4 square. So 16 is a perfect square. Similarly, as I have taken 25, and 25 also can be written as the product of same factors 5 multiply 5. It can be written as 5 index 2. This means perfect number will be expressed as the pair of same factors. So students, from number 1 to 100, we are having only 10 perfect squares. If we talk about from 1 to 100, perfect squares are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 9, 49, 64, 81, 100. So question is that if you have to check whether the number is perfect square or not, necessary condition is that the last digit of that particular number should be as 1, 4, 9, 6, 5, 6 again repeated, 9 again repeated, 4 also repeated, 1 is also repeated, and 0. What conclusion we got? That is, the numbers ends with 1, ends with 4, 9, 6, 5 and 0. The numbers which ends with 1, 4, 9, 6, 5 and 0, those numbers will be perfect squares. And students, one thing more, the numbers which ends with 1, 4, 9, 6, 5 and 0 may or may not be a perfect square. As I have written here 81, I have taken 81, and it can be written as 9 into 9, 9 square, and it ends with 1 as. So if I just, on the other hand, I take 221, in that last digit is 1, right? But it is not a perfect square. So the numbers which ends with 1, 4, 9, 6, 5 and 0 may or may not be a perfect square. But the numbers which ends with 2, 3, 7 or 8, the numbers which ends with these digits 2, 3, 7 और 8, that numbers never perfect square. वो numbers कभी भी perfect square नहीं होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है 47, तो 47 का लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 7, जो कि हमारी इस कैटेगरी में आ रहा है. सो 47 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. So students, next property, that is a number ending with an odd number of zeros is never a perfect square. As if you are taking any number and the number of zeros are odd, as 40 having zeros 1 0 only, this means the odd number of zeros, so it is not a perfect square. Similarly 1000, in 1000 also 3 zeros are there, so it is also not a perfect square. Next property, that is the square of an odd number is always an odd number. जब आप स्क्वायर करोगे किसी भी ऑड नंबर का, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो भी क्या होगा? एक ऑड नंबर ही होगा. जैसे 3 का स्क्वायर है 9 आ रहा है, 3 ऑड नंबर, एंड आंसर विच यू गॉट दैट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. सिमिलरली 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 7 भी ऑड नंबर है और 49 भी ऑड नंबर है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. जब आप स्क्वायर करोगे किसी भी इवन नंबर का, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर भी एक इवन नंबर ही होगा. जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर, आंसर इज 4. 2 इज एन इवन नंबर एंड 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर.
ऑड का स्क्वायर करोगे आंसर ऑड, इवन का स्क्वायर करोगे आंसर इवन। सिमिलरली द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 1 और 9 एंड्स विद 1। कोई भी नंबर है जो आपका एंड कर रहा है 9 या 1 के साथ, जब आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो उसका लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। जैसे 19 का स्क्वायर किया, 19 में लास्ट डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर किया, आपके पास आंसर आया है 361, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 1। सिमिलरली 11 स्क्वायर इट विल बी 121, इन दैट लास्ट डिजिट इज 1। चाहे वो नंबर एंड कर रहा है 1 से चाहे 9 से, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर जो आएगा, आप आउटपुट आएगी, वो एंड किससे करेगी, 1 से। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 2 और 8 एंड्स विद 4। सेम एज किसी भी जो भी नंबर है, नंबर एंड कर रहा है 2 से या 8 से, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका आएगा, वो लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। जैसे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 8 स्क्वायर 64 एंड विद 4, 12 स्क्वायर 144 एंड विद 4। So all the numbers ends with 2 or 8 having the square number ends with 4. Next property, that square of a number ending with 3 or 7 ends with 9. जो भी नंबर हैं 3 और 7 के साथ एंड कर रहे हैं, एंड डिजिट जो उनका है 3 एंड 7 है, जब आप उन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका जो आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 9 होगा। सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 एंड्स विद 5। जब आप कोई भी नंबर है जो 5 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एज 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n equals to the sum of first n odd numbers, as in that they are saying if you have to write down the square of any number that can be expressed as the sum of odd numbers, first n odd numbers, as you are going to find out one square, so one square can be expressed as sum of odd number। तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 1, तो कितने लिखने हैं, 1 ही। सेम एज 2 का स्क्वायर करोगे तो इसमें कितने नंबर लिखे जाएंगे, ऑड नंबर लिखे जाएंगे, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स आएंगे, 1 + 3, आंसर इज 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। एंड 3 स्क्वायर इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। कौन से 3 नंबर ऑड नंबर होंगे, 1, 3 एंड 5, सो आंसर इज 9, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। सिमिलरली 4 स्क्वायर इट विल बी 1 + 3 + 5 + 7 इक्वल्स टू 16। तो बच्चों आपने ध्यान क्या रखना है इस चीज़ में, इसमें सारे नंबर्स जो हैं वो ऑड ही होने चाहिए, ऑड नंबर्स विल बी देयर। एज 64 है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 8 फर्स्ट ऑड नंबर्स, 8 ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम 1 से, 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15। Now these all, if you will just go for counting, total 8 numbers are there, so it will be 8 square. Similarly, if you have to write down 169 in the sum of first n odd numbers, first 13 odd numbers, then you can express it as 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 and + 25. So total numbers are 13. So it will be 13 square.